like the use of tassels and a lot of layers and ruffles. But the style portion has still been our side. It's been edgy. We've got a lot of slits, we've done a lot of backless numbers. We've done like sexy outfits, evening wear in a nutshell for the most part. We this time around we did androgyny a little less. Like we just had like a part of it, which is Rasi Gosha style. But we've done a lot of feminine silhouettes. It's been flirty. It's been feminine. It's been young. So that's pretty much it. Thank you. Amara, do you want to say a few words? Um, well, Karan knows this. I've always loved his work. I loved him when he first started itself, and I've actually worn some of his garments. I don't know if you know that. Yes, So walking for him, it was honestly a lot of fun. All my friends were like, "Oh, you're so lucky," and I'm like, "I am," because his clothing is fun, it's fresh, it's young, and I guess it just keeps us young as well. We're opening the floor for some questions. Does anyone have any questions? No? The silhouette? Okay, so the outfit basically that Amara is wearing is a powder apple blue and it's got some teal in it. The inspiration, like I said, the collection was subtly inspired by flowers, and we've taken an inspiration from a blue tulip. Like we've got like a tulip skirt at the bottom, and we've got that kind of neckline going as well. We've done a very flowy silhouette at the back and mid thighs, so we can have a lot of like the whole leg stick out to make it sexy. We've got some tassels going, which is behind the whole collection. So that's pretty much it. Yes. Sure, why not? I mean, if you're doing a lot of like, say, tassels have always been in different forms with fringes, or if you go really edgy, you can see that in the form of leather fringes. If you go on the other side and you're looking for like the more softer, more feminine side of it, you will see a lot of glass bead tassels, which we've used this time in our collection. So I think, yeah, it is something we really see there. I'm used to it now, but I still always get a little nervous. This is something that was really fun to walk in as well, and I had a lot of fun. If you could see on the ramp, I think I was just smiling throughout. So yeah, excitement. Any more questions? इस टाइम हमारा कलेक्शन समर और स्प्रिंग का था. रिजॉर्ट भी इसी सीज़न में आता है, इसलिए हमने बहुत सारे फ्लोई सिलवेट्स बनाए हैं, बहुत सारा शिफॉन यूज़ किया है. बहुत फेमिनिन सिलवेट्स है, स्लिट्स है, शॉर्ट ड्रेसेस है, रफल्स, लेयर्स, टैसल्स. हमने पूरा इंस्पिरेशन इस टाइम फूलों से लिया है, तो इसलिए कलर पैलेट भी वैसा रखा है. सफ़ेद है, हरा कलर है, नीला है, ऑरेंज है. तो हाँ, इस टाइम हमने पर सटली लिया है. हमने सिर्फ अपने पैटर्न मेकिंग और टेक्निक में यूज़ किया है. हमने फूलों का प्रिंट नहीं बनाया है या एम्ब्रॉयडरी नहीं की है. हम चाहते थे कि लड़कियाँ फूल लगे, और वो लगी रहे. हम देख रहे हैं. ओके, मैं आपसे जानना चाहेंगे, आप एकदम प्रिंसेस की तरह लग रही हैं. क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? I just love this dress. It fits like a dream, and I think it looks really nice. It's fun to wear. It's got tassels, it's got your ruffles, and it's like young and it keeps us fresh. So I love fun, fresh fashion. ओके, कैसा एक्सपीरियंस था रैंप पर, उसके बारे में थोड़ा बताइए. So now I'm a little used to it, but I always get a little nervous before walking. And obviously, like when a designer asks you to walk for him, it's like an honor in a way. So you can't let them down. So I had fun with it this time because the song was fun and the outfit was fun. ओके, मैंने व्हाट्स योर स्टाइल
स्टाइल स्टेटमेंट अगर बात करिए आपके स्टाइल की, तो व्हाट्स योर स्टाइल स्टेटमेंट? My style. Yeah. I love outfits that are a little loud. I love outfits that are slightly over the top. I love overdressing, and for me, you know, a dress like this is absolutely perfect. ओके, एंड समर के लिए क्या मतलब आप पसंद करते हैं? समर में what क्या टिप्स देना चाहेंगे? For summer, obviously, because it's India, so it's really hot. So I usually like something sleeveless and like a small skirt or something, or shorts. So for me, summer is very cash. ओके मैंने जैसे हाल ही में आपकी फिल्म रिलीज हुई है, सो क्या रिव्यूज एंड क्या व्यूज आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। The audience is loving it. The critics have obviously given it mixed reviews, but everywhere I'm seeing on my Instagram, on my Twitter, on my Facebook, everybody seems to be loving the movie. So I'm so happy. ओके, और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को शेयर करना चाहेंगे? So I'm doing South right now, and I'm going to be making a special appearance in a Hindi film, but you're going to have to wait for that film before I can tell you where I am. Thank you. हाँ, धनी सबसे ज़्यादा चाहेंगे कैसा कलेक्शन था, कैसा लगा आपको, जो उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा, you know, it's very interesting to meet such young talents. Karan is such a young guy, but the kind of collections he's had is amazing. मैं भी अभी Karan का ही एक outfit मैंने पहना है जो स्पेशली मेरे लिए बनाया गया है, तो I'm very excited to wear this. जब मैंने पहना तो मुझे लगा इससे perfect हो ही नहीं सकता, you know. So it's very nice to be a part of this show today. ओके, इसके बारे में जानना चाहेंगे, जो आपके पैलेस के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यार white is my personal favorite और ये बहुत ही comfortable सा, ये बहुत ही classy से cuts हैं इसमें. It has some lovely back, it has some nice crop top look. So you don't. Oh, okay. It's a very nice gown that he's made. It's got lovely cuts. You know, इसमें ये सिर्फ complete एक gown नहीं है, इसमें बहुत प्यारे cuts हैं और एक लड़की की feminism को you know बहुत अच्छे से दिखाता है. And I love the comfort. मैं बहुत comfortable हूँ, which is very nice. ओके, जैसे कि कारा टिकट में सबने आपको बहुत पसंद किया, तो अपकमिंग क्या है, क्या देखने में लोग वहाँ? मेरा अभी शो ख़त्म हुए 10 ही दिन हुए हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा छुट्टी मना रही हूँ. अभी मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रही हूँ. अभी मैं बाली जाकर आई हूँ, अभी मैं फिर से कहीं और जा रही हूँ. आई थिंक 10-15 दिन और छुट्टी मना के फिर मैं आई थिंक आई विल साइन अ न्यू शो. तो एकदम से आप नया सरप्राइज देने वाले हैं? डेफिनेटली आई होप आई सरप्राइज माई सेल्फ बिकॉज एज एन कब तक मिलने वाले हैं surprise? सी एज एन एक्टर आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम माई सेल्फ. सो आई रियली होप, अभी तक मैंने कुछ साइन नहीं किया है, बट बहुत इंटरेस्टिंग शोज़ की बात हो रही है. सो आई रियली होप दैट आई डू समथिंग रियली फन नाउ. थैंक यू.